Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily news and editorial analysis which I'll be covering from the Hindu and Indian Express. So the most important news and editorial of the day would be discussed in this session. Let's get started with news topic list. Today is 21st of January. The first topic is fall in deputation to center in 2021. We'll see the figure. Second, extended range of Brahmos flight has been tested successfully. Third, Assam Meghalaya meeting over the boundary issues with the Ministry of Home Affairs or the Home Ministry. Second last, concern over the 5G and flight safety. The last is an editorial, the missing federal spirit, right? We understand the important aspects of the federal spirit in terms of constitutional provisions as well. Apart from this, at the end of this video, there would be MCQ based questions. These questions is for practice, which you can do at your home. And these questions is going to be based on current affairs. Right, so this is all topic list that I'll be discussing with you. Let's get started. And before we start, just to tell you that you can subscribe to Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube if you're new to our channel. If you find this video informative and helpful, do not forget to press a like button. And a small announcement about the Republic Day offer. We are offering 3 offers for you. First is discount you can get at UPSC courses, another is for WBCS, and third pertains to the test series. So for more details, I provided a dedicated link where this particular course is valid till 26th of January, right? So do check it out. You can avail the benefits out of it. First news of the day, fall in deputations to center in 2021. This particular news is important for General Studies paper 2. Government policies and intervention for the development of various sectors and issues arising from it. So according to the data which was available by the Department of Personnel and Training, DoPT जो regulatory body है IAS cadre को maintain करने के लिए, manage करने के लिए, उन्होंने कहा है कि जो number of central deputation reserve है, जिसको CDR भी कहते हैं, in common term we call it CDR, right? तो CDR for IAS officer has gone down, जहाँ पहले 309 हुआ करती थी 2011 में, now it has come to 223. So this is the current number. So the decrease in the central deputation of the IAS officer, that is Indian Administrative Services officer, has become more stark in the total pool of officers that is serving in our country, right? At this, the level was extended. Earlier in 2014, it was 621 only, right? तो ये number थी 621 2014 के लिए. 2021 में इसको बढ़ा करके 1130 कर दिया गया, that is 1130. So this is an increase of around 80% that government has done with regards to the CDR and deputations that can be done to the IAS officer from state so that they can serve in the union or in the center, right? तो इसके बाद जो ज़रूरतें बढ़ी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस हैं उनको चेंज करने की बात कही है ताकि जो डेपुटेशंस हैं उनके प्रोसेस को ईजी किया जा सके और जो नंबर्स ये इंक्रीज हुए 1130 इनको फिल किया जा सके, राइट? Now there's All India Service Rule, also known as AIS rule, और जितने भी All India Services के ऑफिसर्स होते हैं उनमें AIS या फिर AIS ऑफिसर्स भी कहते हैं उनको, वो रूल एप्लीकेबल होती है. So they are recruited by union government, right? By the UPSC conduct to examination, civil services की examination होती है जिसके थ्रू उसकी अपॉइंटमेंट होती है, and they place basically जो भी पर्सनल सेलेक्ट होते हैं उनको स्टेट्स के साथ भी रखा जाता है अटैचमेंट में. they serve for the state but they are actually the employee of a union government, right? So वो दोनों, both in the state as well in the center, they can serve, right? The total strength of any cadre is calculated by including the central deputation reserve. उसके जो central deputation reserve है, कितनी उस state से central deputation आनी है, वो सारी चीजें मिला करके cadre strength decide की जाती है. So which is around 40% of the sanctions post. जितने post है उसके 40% CDR के लिए reserved होते हैं. Now CDR utilize has gone from like 25% in 2011 to 18% presently. तो जो actual allocations थी 40% की वो reduce होके 18% हो गई और 2011 में 25% थी. So that is a reason the government want to change some rules. Now proposal to amend Rule 6. What is this Rule 6? I have discussed this detail in the previous editions of our news analysis. You can check it out. So as per सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल जो DoPT की प्रपोजल है उसमें रूल 6 क्या कहती है? रूल 6 पर्टेन टू द डेपुटेशंस ऑफ कार्डर ऑफिसर्स, राइट? जितने भी डेपुटेशंस होती हैं स्टेट से सेंटर में उसके सारी प्रोविजंस रूल 6 में मेंशन है DoPT के प्रपोजल्स में. एंड द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कार्डर रूल 1954 वाज नेसेसिटेड ताकि जो नंबर ऑफ ऑफिसर्स हैं वो
अवेलेबल किए जा सके फॉर द सेंट्रल डेपुटेशन, राइट. एंड इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट. जो रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट ने जो सैंक्शंस हैं वो 80% से इंक्रीज की है, सो दैट the efficiency can be improved. But to fill this 80% vacancy which has been increased, they need lot more IS officers from the state which is at the rank of under secretary or secretary. Now, what is central proposal? The union government has proposed a change where the services of all India services, that is IAS, IPS और IFS, ये तीन ऐसे सर्विसेज हैं जो ऑल इंडिया सर्विसेज में आती है. मेनी पीपल टेंड टू कंफ्यूज कि और भी जो सर्विसेज हैं वो ऑल इंडिया सर्विसेज है. सिर्फ ये तीन सर्विसेज हैं जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, राइट. एंड दीज ऑफिसर कैन बी पोस्टेड और डेप्यूटेड एनीवेयर अक्रॉस द कंट्री. पैन इंडिया वो काम कर सकते हैं, बट यहाँ पे गवर्नमेंट की कंसेंट ज़रूरत होती थी. बट जो सेंटर की प्रपोजल्स हैं, यहाँ पे अब सेंटर की कंसेंट, स्टेट की जो कंसेंट है वो मैंडेटरी नहीं होगी. दिस इज व्हाट द प्रपोजल इज. और इसके खिलाफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने भी कंसर्न रेज किया, बिकॉज उनकी भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनरी है उसमें भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगी. स्टेट्स ऑल्सो वॉन्ट दैट दीज ऑफिसर्स शुड स्टे इन द पर्टिकुलर स्टेट, बिकॉज उन्होंने काफ़ी टाइम वहाँ पे स्टेट में डिवोट किया हुआ था, सो दे अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर, राइट. सो दैट इज अ रीजन कई स्टेट्स ऐसे होते हैं जो अपने वहाँ के ऑफिसर्स को सेंट्रल डेपुटेशन में नहीं भेजना चाहते हैं. So now with new proposal, the state consent would not be required and it would not be mandatory. This is creating problem for many states. And the state would be able to relieve any officers from their cadre if the state government does not give the central government decision. जहाँ पे एक limited time दी जाएगी, stipulated time में अगर उनके decisions नहीं आते हैं तो यूनियन गवर्नमेंट अपनी discretionary power use करके उनको deputations पे बुला सकती है. Other news, extended range of Brahmos missile has been test fired. We'll see the importance of this news. Important for General Studies paper 3. Achievement of Indian science and technology, Indianization of technology and development of new technology. Recently, India ने successfully test fight किया है Brahmos supersonic missile, cruise missile. Intentionally content use की गई है and they have a improved performance in terms of integrated range, right? This was actually conducted from integrated test range in Chandipur in Odisha. The flight test is a major milestone for the Brahmos program. As we know, Brahmos is the successful program and a venture between India and Russia. So the launch was conducted by the Brahmo Aerospace in close coordination with the DRDO team. तो DRDO की जो टीम है उसके coordinations के साथ ये सारी process को successful की गई है. Now features of the missile की अगर बात करें, the Brahmos missile is the fastest missile in the world that has a top speed of around 2.8 Mach, which is 3 times the more speed of a sound, right? And the missile testers was required with the advanced indigenous technology. Most of the technology that has been upgraded is indigenous in nature, and it follow a modified optimal trajectory for enhanced efficiency and improved performance. Definitely the performance is going to improve. We are using 21st century generation technology, which would invariably will be helping in a lot more return. Now the missile with the modified control system has been fine-tuned to achieve the enhanced capabilities. Now what is extended range Brahmos missile? If you talk about this missile, this is a joint venture between India and Russia, and it has a range of around 290 kilometer at present, right? But यहाँ पे एक अच्छी बात ये है, the positive part is that India is a part of missile control technology regime, right, which they have signed in 2016. तो India अपने capacity में आगे बढ़ सकता है. 290 किलोमीटर से आगे बढ़ के 400 किलोमीटर तक की रेंज को यूज की जा सकती है, बिकॉज वी हैव साइंड द एग्रीमेंट ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल regime. And India is also laying the ground to develop the high Brahmos supersonic cruise missile, जहाँ पे जो रेंज होगी इसकी that would be around 800 किलोमीटर. तो अब जो ब्रह्मोस की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनने वाली हैं उनकी रेंज would be extended to 800 kilometers. The reason why this is possible, because India is a member of Missile Technology Control Regime. So this is again factually important for the prelims examination. Now the other news, Assam Meghalaya meeting over the boundary issues. This particular news is important for General Studies paper 2. Functions and responsibility of union and state and challenges pertaining to the federal structure, right? Now ministry जो खास करके जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है, उन्होंने चीफ मिनिस्टर ऑफ असम और मेघालय के साथ मुलाकात की है. जो यूनियन होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह, he has met both the leaders and the chief minister of both states have agreed that they would work on a formula of give and take,
जहाँ पे दोनों जो स्टेट्स हैं वो जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसके लिए एक रेजोल्यूशन फाइंड करेंगे. एज पर द फॉर्मूला, इन द फर्स्ट स्टेज जो 12 डिस्प्यूटेड एरिया है उनके लिए रेजोल्यूशंस लाई जाएगी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर विल एग्जामिन द रिपोर्ट दैट हाउ थिंग्स इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड. जब भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के जो न्यूज़ होते हैं दैट बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू एज वेल, राइट. तो मेक श्योर यू हैव योर गुड पॉइंट्स as well for the mains and interview. Now, regional committee was formed and they have submitted the report. The regional committee for both the state have submitted a report where it says that a first phase of resolution has to come at the earliest. And the sixth area that was taken into the final settlement was Haim, Gizang, Tarabari, Boklapara, Khangrapi, this is Khangapara and Pilingatta, and other is Ratachira. So these are some of the pronunciation that we can have at this point of time. And the other six area where the dispute are more complicated would be taken up later, right. तो अभी initially 12 districts के लेकर के बात की गई, उसके बाद gradually और जो disputed districts हैं उनमें discussion होनी है. Assam will get around 18.51 square kilometer of total 36.8 जो disputed area है, and remaining would remain with the Meghalaya. So this is how the things are going to work. So this is a map just for a particular locations. ये पोको की एरिया है. This is Langpi. This is Meghalaya and Assam. यहाँ पे वेस्ट खासी हिल्स है जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, and this is bordering with Bangladesh, right? Now no claim further. अभी जो ये proposals की गई हैं as per the agreement, both states, one of the border dispute जो है दोनों स्टेट्स के बीच में, वहाँ पे जो 12 एरिया है उनको रिजोल्यूशन की जाएगी और मेघालय विड नॉट बी एबल टू मेक एनी फर्दर क्लेम ऑन द असम टेरिटरी, राइट. वंस this particular thing is resolved, there would be no claim further. So this would be a more a final shot of decision. And Meghalaya was carved out from Assam in 1972. Both states have shared the boundaries of 733 kilometers, and over the years there have been several schemings between two communities inhabiting in the both areas. So now government is looking for a resolution so that no dispute in terms of land boundaries should occur between Assam and Meghalaya. Now the concern over 5G, because of which some flight was not being allowed to US. We'll see how this is important. Basically, यहाँ जो science and technology के part है, we'll concern more on that, and this would be something that would be important for the prelims examination also. Now, Air India has recently announced that it will resume its flight operation to the United States. हुआ क्या था कि यूएस में जो फ्लाइट्स जानी थी, कुछ फ्लाइट्स को 2 दिनों से रोक दिया गया था बिकॉज ऑफ द 5G सर्विसेज दैट इज एक्सपेक्टेड टू रोल आउट इन इनबाउंड फ्लाइट, राइट. सो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा है दैट लो विजिबिलिटी कंडीशंस और जो रोल आउट होगी खास करके जो 5G सर्विसेज हैं वो सी बैंड को इफेक्ट करेंगी, and there's issues with regarding this band which can impact lot other equipment that is inbound in a flight. So why the Air India has suspended the flight? जो Federation Aviation Administration है, they have warned that new 5G जो टेक्नोलॉजी है जो कि यूज की जानी है ANT और Verizon की तरफ से, that is allocating around 3.7 to 3.98 गीगाहर्ट्ज बैंड, और ये पोटेंशियल ऐसी बैंड है जो कि ऑनबोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स जो होती है रडार के एल्टीमीटर्स जो होते हैं उनको अफेक्ट कर सकती है. और ये एल्टीमीटर्स में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं. फर्स्ट इज बैरोमेट्रिक, द अदर इज लेजर एंड थर्ड इज रेडियो और रडार एल्टीमीटर्स. Now how this is going to be impacted, I will show you a graph also. So most commercial flights में अगर देखेंगे, commercial aircraft they use combination of this altimeter in the global positioning system. जो GPS है वो determine करती है रास्ते को, how is the path. Other than this they recognize the sea level, presence of high rises, mountains, जो obstacles आने वाली हैं फ्लाइट के आसपास में वो रेडिएशन से पता चल जाती हैं, and the flying time, the actual flying time, right. So अगर इस गीगाहर्ट्ज के सी बैंड में अगर ये यूज की जाती है 5G की सर्विसेज, सो दीज ऑल इक्विपमेंट्स वुड बी इम्पैक्टेड, और इससे जो फ्लाइट के ऑपरेशंस होंगी उनमें भी इम्पैक्ट होगी, जो एक सिक्योरिटी कंसर्न है फ्लाइट ऑपरेशंस में. Now 5G telecoms and airline safety की अगर बात करें, the radio radar altimeter is at very small, which has low power, and radar system operates between 4.2 to 4.4 gigahertz frequency microwave C wave, right. तो इंटरफेरेंस होगी दोनों में, खास करके 5G और C बैंड के वेव में. The high frequency of this altimeter enable aircraft जहाँ पे small antenna होती है which produce powerful signal that can be relayed quickly and accurately. Now this is a graph that will help you understand how this C band is going to function. आप ये range देख सकते हो. This is the range
between 4 GHz to 8 GHz, and it being said कि जो 5G के टेलीकॉम एयरलाइन है वो इस रेंज पे इंटरफेयर करेगी 4.2 से लेकर 4.4 तक. So this is a range 4.2 to 4.4, ये 4 और 8 के बीच में है, which is a part of C band range, right? So this is the reason they have said कि roll out की वजह से security concern है, safety issues है for the traveler and the passengers. Now, what is situation in India? In India, where 5G is yet to be rolled out, frequency of 5G जो India में कही जा रही है, that is 3.3 to 3.68. So it is below that, C band के थोड़े से कम में है, and it is learned that Federal of Indian Pilots is meeting Department of Telecommunication where they have expressed their concern about the closeness of altimeters and the 5G bands के बारे में, right? Now, the DoT, however, have assured that this would also have no interference in the frequency of commercial 5G services where 530 MHz is away from the altimeters. तो ये थोड़ी उससे दूर है जो कि altimeters को impact नहीं करेगी. So we'll see how the operation in India is going to happen, and if this is a condition, possibly all flights would not allow any 5G type of services in their on-board flight. We'll see how the security purpose and other things are taken into consideration before this is being finally executed. Now the other news, this is an editorial, the missing federal spirit. This particular news is important for general studies paper 2, function and responsibility of union and state and federal structure की जो problem है, challenges हैं, उनके बारे में. Now we'll directly jump into the editorial, we'll see the background and then we'll talk about the other details. So starting with the background, in January 26, 1950, Indian Constitution has come into play, जहाँ पे कोशिश ये की गई थी कि जो idea of justice है, equality है और liberty है. In short, we call it JEL, right? JELNF. जो justice, equality, liberty and fraternity है, उसको impart की गई हमारे constitutions में. And our constitutions tried to shape the aspiration of the people for sovereign, socialist, secular and democratic republic, right? और उसके साथ लोगों को fundamental rights की जो एक core essence थे वो भी दी गई है. Although it is necessary that ये आइडिया मेंशन की गई थी प्रियम्बल में, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस ने लेवल ऑफ गवर्नेंस को इन्हांस करने की बहुत सारे बातें कही थी, where preamble is also playing a very crucial role. Now some constitutional provisions की अगर बात करें, we have 7th schedule in our list, जहाँ पे 7th schedule के अंदर 3 लिस्ट बनाई गई हैं. The first is union, second is state and third is a concurrent list. Concurrent list में दोनों states और center की बातें होती हैं. But अगर बात करें concurrent list की, तो यहाँ पे जो हायर से होती है वो सेंटर की होती है हमेशा. Now at each level of the government, our sphere is to enable the context sensitive decision making. Later the institutions ने देखा कि जो local self governance है उसकी भी जरूरत पड़ी. फिर 73rd और 74 अमेंडमेंट के बाद जो ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी थी उसको enhance किया गया और decentralization was promoted, right? Now Article 246 and 243G provide for the division of responsibility. और आर्टिकल 263 के अंदर ये प्रोविजंस है जहाँ पे इंटर स्टेट काउंसिल उसको बनाया जाए ताकि एक स्मूथ ट्रांजिशन हो बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट. नाउ टॉकिंग अबाउट द फाइनेंस कमीशन की भी स्टैब्लिशमेंट हुई. आर्टिकल 280 है जो कि इसके बारे में डिटेल प्रोविजंस देती है दैट डिफाइन द फाइनेंशियल रिलेशनशिप इन टर्म्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट. फाइनेंशियल मैटर्स में फाइनेंस कमीशन की एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट रोल है, right? And as a part of this, institutional Raj Sabha has constituted makers that जो scope है, जो deliberations है, जो consultations है, वो enhance रहे ताकि spirit of cooperative federalism हमेशा बरकरार रहे. In this means 2021 की जो मेंस हुई है उसमें यूपीएससी ने ऑलरेडी 14 फाइनेंस कमीशन पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं. सो मेक श्योर आप 14 एक साल के जो इससे पहले की जो फाइनेंस कमीशन हैं, अभी 15th फाइनेंस कमीशन चल रही है, तो हमेशा एक साल बैक की भी फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस आपको ध्यान होने चाहिए बिकॉज यूपीएससी इज आस्किंग दिस, राइट? इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द क्वेश्चंस ऑफ मेंस, डू चेक इट आउट. यू कैन फाइंड दैट इन आवर आईज ज्ञान वेबसाइट्स आल्सो. नाउ चैलेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की बात की है. जिस तरह से प्लानिंग कमीशन बनाई गई थी उसकी कोर आइडिया थी कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जा सके और उसको सस्टेन किया जा सके. नाउ द इंटर स्टेट ट्राइब्यूनल वाज फॉर्म्ड, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज फॉर्म्ड एंड अदर कंसल्टेशन वाज डन बिटवीन यूनियन स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज, राइट? तो यूनियन स्टेट और जो खास करके यूनियन टेरिटरीज हैं, इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए ये सारी कमीशंस की एस्टैब्लिशमेंट हुई जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करती हैं बहुत सीन में. प्लानिंग कमीशन वाज स्क्रैप्ड. इंटर स्टेट काउंसिल की जो मीटिंग है वो पिछले 7 सालों से हुई नहीं है एंड द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हैज नॉट मेट एट ऑल. सो वी सी हाउ दिस थिंग्स आर फंक्शनिंग बिकॉज द थिंग्स
that is actually strengthening the democracy is not into the play, right? तो ये एक बहुत बड़ी concern है. Unfortunately, the nation is not witnessing a worst assault in the federal structure and institutions. Now talking about the overstepping jurisdiction of the center ने क्या किया अभी recently जो फॉर्म लॉ आए थे वो फॉर्म लॉ एक इंटरफेरेंस थी जहां पे जुरिस्डिक्शंस जो सेंटर की थी वो इंटरफेरेंस कर रही थी और विदाउट एनी कंसल्टेशन दिस वाज पास्ड. इवन तमिलनाडु में जो सुसाइड के केसेस हुए हैं नीट एग्जामिनेशन को लेकर के उस पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत हद तक अपनी स्टे क्लियर नहीं की है. नाउ सेंट्रलाइजेशन एग्जामिनेशन इन द डिफरेंट लैंग्वेजेस इन द कंट्री द डिफरेंट बोर्ड इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. सो ये कुछ एक ओवर स्टेपिंग जुरिस्डिक्शन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट के लेवल पे जाकर इंटरवीन की है without consulting the state government. Now, new education policy has flagged encroaching the federal nature of the policy. जो BSF की jurisdiction बढ़ाई गई असम, वेस्ट बंगाल और पंजाब में वहाँ पे भी states की कोई consultation नहीं थी. Recently, जो रिपब्लिक डे की जो टेबल वर्क्स होती हैं उसमें केरला, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल को भी नहीं अलाउ किया गया है एंड द रीजन वाज नॉट बीइंग साइटेड ओनली से दैट जो भी चीजें की गई है वो टर्म्स और कंडीशंस को देख के की गई. आर्टिकल 370 वाज स्क्रैप्ड विदाउट एनी कंसल्टेशन विद द स्टेट. तो यहाँ पे जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की जा रही है दैट इज लाइक समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड द स्टेट हैज टू से अ प्रॉपर जो कंसेंट है स्टेट की वो भी बहुत जरूरी है. अगर कंसेंट ना हो तो एटलीस्ट कंसल्टेशन तो मैंडेटरी पार्ट है, राइट? Now, conclusion that it should underline Article 1 that is in the Constitution will declare India as a Bharat and a union of state. तो union of states के लिए जहाँ सेंटर और स्टेट दोनों की जो रोल है वो काफ़ी एक्टिव होती है और devolution of power बहुत ज़रूरी है. And a conscious recognition of the federal character in India is essential to protect the national characters. So this is all about the editorial. थोड़ी क्रिटिक की गई है जिस तरह से गवर्नमेंट की एक्शन है उसके बारे में, बट यू शुड बी द फैक्ट्स दैट इज बिन गिवन इज ट्रूली एक्यूरेट. आप इस तरह के पॉइंट्स डायरेक्टली एग्जामिनेशन में यूज कर पाएंगे. Now moving to the MCQ questions of the day. Before I proceed, just to tell you the answer of yesterday questions. For the first question, the correct option is C. For second question also, the correct option is C. Today's MCQ that you have to practice making peace with nature. इनमें से कौन कौन से करेक्ट ऑप्शंस आपको बताने हैं. UN, EP है, IPCC है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर. सो डू चेक इट आउट कौन कौन से करेक्ट ऑप्शन है और इन सारे एजेंसीज की भी जो भी रिपोर्ट्स पब्लिश होती है डू चेक इट दिस ऑल्सो. Now, vertical launch soft train surface to air missile, जिसको VLSRMs भी कहते हैं. This is developed by DRDO and it's capable of neutralizing aerial threat and close range, including the sea skimming targets. If you have practiced, very good. If not, do check it out. What is the correct options? अभी इंडिया ने बहुत सारे मिसाइल लॉन्च की हैं उसके बारे में भी आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, राइट? सो दिस इज समथिंग विच वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन एंड दिस वाज ऑल अबाउट द डेली न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस फॉलोड बाय द MCQs. If you have any other concern, you can let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video.